Good afternoon, everyone. So currently आपणकर जो मेंस मॉक टेस्ट कंडक्ट हेतिला छटा क्वेश्चन ताको आज हमें वन बाय वन डिस्कस करिबा विथ द सेम स्ट्रक्चर जोटा कि हमें सब बेले फॉलो करे इंट्रोडक्शन रहइबो गोटे बॉडी रहइबो देन कंक्लूजन रहइबो इंट्रोडक्शन हमर शॉर्ट एंड ब्रीफ रहइबो टू द पॉइंट रहइबो देन बॉडी वी विल डिवाइड इट इनटू सब हेडिंग्स देन बुलेट पॉइंट्स एंड जोटी भी एग्जांपल्स रेलेवेंट रहइबो सेठी हमें एग्जांपल्स भी दबा and conclusion again optimistic forward looking गोटे brief conclusion रहिबो सब क्वेश्चन रे ठीक अछि and per question जो माने समस्त रेगुलरली जॉइन होती से जानिथिबे कि पर क्वेश्चन निजो को भी मु 10 seconds to 15 seconds एठी रीड करिया को टाइम देबी to understand and brainstorm a little bit before starting the class मते एठी टिके जणे दियंतु कि ऑडियो एंड मु एठी जो गोटे ब्लैंक पेज रे एनोटेट करूची जहा लेखुची एगुडा सब क्लियर अछि कि नै स्पेशली ऑडियो एंड ऑडियो I'm giving 1 minute. Okay, now I assume कि audio and video clear अच्छी so मु क्लास को कंटिन्यू करूची बट बिफोर दैट मु समस्त को एटी एडवाइस करिबी कि समस्ते नोट्स नै कि बसिबे निजर नहले प्लेन कॉपी एंड पेन and I will be discussing the answer मु फुल सेंटेंसेस एटी किछि लेखिबिनी 200 टू जदि मु एटी 250 टू 300 वर्ड्स रो निजे ही आंसर एटी लेखिबा को स्टार्ट करिबी ताले इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ठीक अछि तो आपण माने कोन करिवे जेमति जेमति हम आंसर डिस्कस करिबा कोन करिवे इंपोर्टेंट जो कीवर्ड्स रहिला कि किछि जदि पॉइंट्स हम एठी डिस्कस करिबा कि किछि कांसेप्ट्स जदि हम डिटेल रे एठी बुझिबा ताकू कोन करिवे ताकू नोट डाउन करिवे फोकस ऑन नोटिंग डाउन दिस थिंग्स so I will be using short forms ki crisp phrases he gala instead of long sentences okay ठीक अछि फर्स्ट मु एठी कहि दोछि कि ओएस और आईएएस 2026 और 27 पई जो माने प्रिपेयर होतिबे सो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू रो फाउंडेशन बैच एठी लॉन्च हेची जोटा कि बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड रे आपण मानकर रहइबो ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे आपण अवेल करि परिबे कोर्स टी को वन ऑन वन मेंटरशिप रो भी प्रोविजन रहिची एंड फॉर फर्दर डिटेल्स एठी स्क्रीन रे दिया जाइतिबा नंबर को जाई कि कांटेक्ट करिवे ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 1 examine the factors that led to the decline of Afghan power and rise of the Mughal Empire in North India. Read the question. Question कहला कि अफगान पावर रो जतबले डिक्लाइन हैला एंड सेही टाइम रे जो मुगल एम्पायर नॉर्थ इंडिया रे राइज कला व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ अफगान पावर कोन फैक्टर्स ता पछरे रिस्पांसिबल थिला इंट्रोडक्शन रो हमें स्टार्ट करिवा
एंड मु कहि इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ठीक अच्छे एमती हिसाब रे नेबे जदि आपनकर बॉडी टाको गोटे मूवी हिसाब रे नउचती ना कि आंसर रो सबु जाक डायमेंशन एंड डिमांड्स को सेठी आपण फुलफिल करछन इंट्रोडक्शन शुड बी योर ट्रेलर द ट्रांजिशन एटी कोन कहै छै अफगान पावर रो डिक्लाइन होची एंड मुगल पावर रो बा मुगल एम्पायर रो एटी राइज होची सो द ट्रांजिशन फ्रॉम अफगान रूल to Mughal dominance Koti in North India during the 16th century was shaped by internal weakness. ତାଙ୍କର internal weakness ଥିଲା Afghans ମାନଙ୍କର ବା Afghan rulers ମାନଙ୍କର and Afghan rulers and the military and Mughals ମାନଙ୍କର जो rise ହେଲା it is because of their administrative strength. Okay. आपको गोटे सेंटेंस रे टू लाइन सेंटेंस रे आपको फ्रेम करि परिबे बॉडी मु एठी खाली बुझेया पई एठी बॉडी लेखुची कि बॉडी एठू स्टार्ट हैला एग्जाम हॉल रे पेपर रे एमती ऊपर हेडिंग दबार नहीं बॉडी करी कि अपन डायरेक्ट सब हेडिंग जहा अपन दे परिबे नंबर 1 वीकनेस ऑफ अफगान फर्स्ट हमें वीकनेस देखबा कोन पई तकर डिक्लाइन हैला कोन फैक्टर्स रिस्पांसिबल थिला अफगान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक अछि फर्स्ट थिला ट्राइबल नेचर तांकर ट्राइबल नेचर ऑफ पॉलिटी माने जो अफगान नोबल्स माने थिले से माने कोन करथिले से माने ऑटोनॉमी को सेंट्रल अथॉरिटी ऊपर वैल्यू करूथिले सो तांकर कोन होतला सेतबळे फ्रीक्वेंट रिबेलियंस होतला देन लैक ऑफ स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन लैक ऑफ स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन जेंति मुगल्स मानकर गोटे स्ट्रांग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से माने करथिले unlike mughals there was no stable bureaucratic system ठीक अछि फॉर एग्जांपल एटी गोटे एग्जांपल दे परिबे कॉन्फ्लिक्ट अमंग लोधी nobles weekend इब्राहिम लोधी ठीक अछि फर्स्ट हमर वीकनेस ऑफ अफगान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेकंड उस तांकर कोन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थिला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसयूनिटी यूनिटी नथिला एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थिला अफगान चीफ्स माने से माने कंटिन्यूअसली फाइट करूथिले एंड जो नोबल्स माने थिले मु एटी कहली से माने ताकर गोटे ट्राइबल नेचर ऑफ पॉलिटी थिला जो से माने कोन करथले ऑटोनॉमी को बेसी वैल्यू करूथिले सेंट्रल अथॉरिटी अधिका सो द नोबल्स इनवाइटेड एक्सटर्नल इंटरवेंशन इंटरवेंशन फॉर एग्जांपल जेमति कि किछि नोबल्स कोन कले बाबर को सपोर्ट करूथिले अगेंस्ट इब्राहिम लोधी supported Babur also. Then military limitation कौन थिला मिलिटरी लिमिटेशन रे से माने ट्रेडिशनल वॉरफेयर ऊपर बेसी रिलाई करथिले ट्रेडिशनल वॉरफेयर से माने किछि गन पाउडर हे गला कि आर्टिलरी हैला ए सब को यूज करू नथिले दे लैक द यूज ऑफ दिस थिंग्स दे कुड नॉट मैच द मुगल टैक्टिक्स फॉर एग्जांपल एटी गोटे एग्जांपल देबे डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बुझेला तापरे में फोर्थ सब हेडिंग पकेबा राइज ऑफ मुगल मिलिटरी सुपीरियरिटी राइज ऑफ मुगल मिलिटरी सुपीरियरिटी से माने गन पाउडर यूज करूथिले गन पाउडर वेपन्स यूज करूथिले देन से माने गोटे तुलुगमा स्ट्रेटजी फॉलो करूथिले एंड वागन लैगर टैक्टिक्स एदिरा माने रखिबे तुलुगमा एंड
wagon lagger tactics ठीक अछि से माने organized थिले they are highly organized and disciplined and se mane they gave a decisive edge in battles like Panipat and Khanwa. Leadership and strategy of Babur. तांकर बाबर कर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थिला एंड गोटे ता साथी सा तांकर गोटे क्लियर पॉलिटिकल विजन थिला डाइवर्स फोर्सेस को केमिति मोबिलाइज करा जाई परिबो से एबिलिटी भी से रखुतिले एबिलिटी टू मोबिलाइज डाइवर्स फोर्सेस ठीक अछि स्ट्रॉन्ग यूनिटी से मेंटेन करी के रखुतिले अमंग द फॉलोअर्स temporary nature of Afghan rivals. शेर शाह सूरी they briefly restored Afghan power. से कौन करथिले briefly restore करथिले Afghan power temporary एटा nature थिला Afghan rivals मानकर restoration of power. काहेकि ना शेर शाह सूरी जे थिले से गोटे effective administration revenue reforms ए सब आनिथिले however तांकर death परे successors माने weak थिले then rapid decline हेतला Afghans मानकर. Mughal administrative strength. मुगल माने कौन करथिले से इंट्रोड्यूस करथिले सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम तंकर थिला ठीक अछि एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थिला एंश्योर्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंक्लूजन कि डिक्लाइन ऑफ अफगान पावर was primarily due to internal disunity weak centralization while the rise of the Mughals was driven by superior military technology, leadership, administrative vision, laying the foundation of what? Stable empire in India. Right. So OPSC and UPSC optional ପାଇଁ କି ଏଠି course launch ହେଇଛି PSIR ओडिया and home science and ए सब optional रे आपनको प्रोविजन सब सेम ही मिलिबो जेमति कि 100% सिलेबस कवरेज रहउची तीनटा जकरे वन ऑन वन मेंटरशिप भी प्रोवाइड हबो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एठी आपण करि परिबे एंड रेलेवेंट नोट्स एंड मटेरियल जहां भी एग्जाम ପାଇଁ की दरकार आपण एठी प्रोवाइड हे जिवो एडमिशन इज करंटली ओपन एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन कांटेक्ट दिस नंबर analyze the role of the Rajput policy of the Mughals in consolidating their empire in North India how did it differ from the Afghan strategies introduction Mughal policy towards
हाँ क्वेश्चन आउ थे आम देखिदबा एनालाइज द रोल ऑफ राजपूत पॉलिसी of the Mughals in consolidating their empire in North India. तो मुगल्स माने जेतेबेले तांकर एम्पायर को कंसोलिडेट करथिले नॉर्थ इंडिया रे सेई टाइम रे से माने कोन राजपूत पॉलिसी अडॉप्ट करथिले एनालाइज द रोल ऑफ द राजपूत पॉलिसी ऑफ द मुगल्स इन कंसोलिडेटिंग एंड राजपूत पॉलिसी मुगल्स मानकर कोन रोल प्ले करथिला तांकर सेई टाइम रे जेतेबेले से तांकर निजर एम्पायर को नॉर्थ इंडिया रे कंसोलिडेट करूथिले how did it differ from the Afghan strategies ठीक अछि मुगल पॉलिसीज टुवर्ड्स Rajputs, especially under Akbar, se gote crucial role play karitila in consolidating the imperial power in North India. ठीक अछि and it was based on जो Rajput policy thila Mughal manakar it was based on conciliation and integration ए दीटा थिला तांकर पॉलिसी अनलाइक अफगान्स मानकर अप्रोच जे कि मोर ट्राइबल अलायंसेस ऊपर फोकस करथिले आउ कोअर्शन ऊपर फोकस करथिले अफगान्स फोकस्ड ऑन ट्राइबल अलायंसेस एंड कोअर्शन मुगल राजपूत पॉलिसी फीचर्स फीचर्स कोन थिला फर्स्ट थिला तांकर पॉलिसी ऑफ अलायंस एंड कंसिलिएशन पॉलिसी ऑफ अलायंस एंड कंसिलिएशन कंसिलिएशन मुगल्स माने कोन करथिले ना से माने अलायंस फॉर्म करथिले थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरिज ठीक अछि फॉर एग्जांपल अकबर कोन करथिले अलायंस फॉर्म करथिले विथ अंबर जयपुर रॉयल फैमिली सेकंड इंक्लूजन इन एडमिनिस्ट्रेशन राजपूत मान को हायर पोजीशन दिया जाउथला इन मनसबदारी सिस्टम हायर पोजीशन इन मनसबदारी सिस्टम ठीक अछि फॉर एग्जांपल राजा मान सिंह एटी गोटे एग्जांपल दे परबे छोटो एग्जांपल राजा मान सिंह तांको टॉप मुगल जनरल अपॉइंट करा जायतिला तोडारमाल से फाइनेंस मिनिस्टर थिले ओके देन रिलीजियस टॉलरेंस रिलीजियस टॉलरेंस अकबर से सुल्खी कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस अडॉप्ट करथिले अकबर अडॉप्टेड सुल-ई कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस अडॉप्ट करथिले जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश करथिले पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश करथिले देन ट्रस्ट और राजपूत रूलर्स मानकर ट्रस्ट को बिल्ड करथिले बिल्ड ट्रस्ट विथ राजपूत रूलर्स ठीक अछि देन ऑटोनॉमी एंड लॉयल्टी राजपूत माने कंट्रोल से ताकर टेरिटरी जहां से एक्वायर करथले ता ऊपर स्टिल ताकर कंट्रोल थिला दे रिटेन दैट कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज इन रिटर्न से माने कोन करथले मुगल कर जो सुजरेनिटी थिला ताको एक्सेप्ट करथले ताकर टेरिटरी ऊपर ताकर कंट्रोल रहबो देन ओनली दे कैन एक्सेप्ट द मुगल सुजरेनिटी एंड सेमती ही हेतिला एंड प्रोवाइडेड मिलिटरी सपोर्ट आल्सो सेकंड कंट्रीब्यूशन टू मुगल कंसोलिडेशन ने देखिए contribution to Mughal consolidation first example political stability provide करथिले नॉर्थ इंडिया रे रिबेलियंस जेहेतु से माने डिप्लोमेसी कंसिलिएशन मुगल्स माने फॉलो करूथिले सो इट इंक्रीज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस द रिबेलियंस इन नॉर्थ इंडिया मिलिटरी स्ट्रेंथ बेटर हेतिला बेटर मिलिटरी स्ट्रेंथ
राजपूत से गोटे की पार्ट भाव प्रूफ होते ऑफ मुगल आर्मी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी टैलेंटेड राजपूत माने गवर्नेंस इंप्रूव करते देन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर they helped in campaigns in the Gujarat Bengal Afghan strategy कौन थिला Afghan strategy ର key features first of all tribal and decentralized system ट्राइबल एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम अफगान रूलर्स ने ट्राइबल चिफ्स बा नोबल्स ऊपर डिपेंड करिक रहउतले वीक सेंट्रल अथॉरिटी थिला देन लैक ऑफ इंटीग्रेशन से माने इफेक्टिवली इंटीग्रेट करि पर नथले जो लोकल रूलर्स माने रहले जेमति राजपूत से गले एंड दे फोकस मोर ऑन फोर्स देन डिप्लोमेसी frequent conflicts frequent conflicts से continuous internal rebellion संगर होतला फॉर एग्जांपल लोधी रूल टाइम रे जो कॉन्फ्लिक्ट आइतला हमें प्रीवियस क्वेश्चन रे तार एग्जांपल हिसाब रे देखले तो की डिफरेंस जदी हमें टिके देखिबा एटी मु गोटे टेबल फॉर्म करूची जस्ट एटी कांसेप्ट क्लियर करिया पे मुगल पॉलिसी एटी हेला एटी हमरो अफगान पॉलिसी हेला जेमति कि नेचर चारटा पिलर रे देखिबा नेचर राजपूत रिलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेबिलिटी नेचर मुगल पॉलिसी रो कोन थिला इनक्लूसिव थिला एंड डिप्लोमेटिक थिला बट अफगान स्ट्रेटजी कोन थिला ट्राइबल एंड कोअर्सिव राजपूत रिलेशंस रे अलायंस और इंटीग्रेशन से माने फॉलो करूथिले अलायंस एंड इंटीग्रेशन लिमिटेड कोऑपरेशन बुझियला देन एडमिनिस्ट्रेशन एठी अंकर सेंट्रलाइज थिला एठी डिसेंट्रलाइज थिला स्टेबिलिटी एठी हाई एठी लो conclusion Mughal policy of cooperation with Rajputs ensured what ensured political stability military strength administrative integration जोड़िको एगुड़िको कोठी absent थिला एगुड़िको absent थिला in Afghan rule and ए जो inclusive approach थिला मुगल मानकर ए जो inclusive approach थिला it became a key factor in the long term consolidation of Mughal empire in North India. Okay. जो माने ओपीएससी ओएस प्रीलिम्स 2026 ए वर्ष अपियर करिवे जो माने जनरल स्टडीज एंड सी सैट पई की एठी से माने टेस्ट सीरीज नै परिवे कोर्स लॉन्च हेची सो सिलेबस कवरेज रहइबो बोथ जीएस1 एंड जीएस2 जोटा को जीएस1 जनरल स्टडीज एंड जीएस2 आमे सी सैट को जोटा कहिछु जीएस1 जीएस2 रो फुल 100% सिलेबस कवरेज रहइबो वन ऑन वन मेंटरशिप रो प्रोविजन भी एठी अछि 36 टा टेस्ट आपनकर एठी टोटल रहइबो आपन देई परिवे देन रेलेवेंट नोट्स एंड मटेरियल सब प्रोवाइड हेजिबो एंड ता सहित वेरी इंपोर्टेंट 19 इयर्स रो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पीवाईक्यूज एटी लॉन्च हे सरची बुक ऑलरेडी लॉन्च्ड तो एटा भी सेमाने को मिलिबो फॉर मोर इंफॉर्मेशन इट इज स्क्रीन दा नंबर दिया जायछि एठी जाई की कांटेक्ट करिवे एडमिशन इज करंटली ओपन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपन को जेमती इच्छा अछि जो मोड रे नबा पई कोर्स सेतरे नै परिवे next question distinguish between quantitative and qualitative monetary policy instruments how do they influence the credit and money supply in the economy
मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स ऊपर क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन पचार जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बट टूल्स रहिला ताको भीतर डिफरेंस कोन आ ताको डिस्टिंग्विश करके शो करबा को हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्वांटिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट केमिति क्रेडिट मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करछ एंड क्वालिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट केमिति आको इन्फ्लुएंस करछ सेटा को भी ठीक करबो डिस्क्राइब करबो करछ सो जो मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स रहिला जोटा कहा द्वारा यूज करा जाए आरबीआई are broadly classified into quantitative and qualitative instruments while जो quantitative tools गुड़ा रहिले से माने कौन करंदी overall जो liquidity and money supply जो रहिला ताकू कंट्रोल करंदी and qualitative tools कौन रेगुलेट करंदी डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को फॉर एग्जांपल इकोनॉमी रो को सेक्टर को केते क्रेडिट मिलिबो तो सेटा से माने रेगुलेट करंदी डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट ओके क्वांटिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ा को जनरल टूल्स भी हमें कहता एंड तांगर एम कोन एम इज टू कंट्रोल ओवरऑल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट वॉल्यूम ओके एंड आर की इंस्ट्रूमेंट सब कोन रहिला फर्स्ट होची रेपो रेट रेपो माने कोन एटा गोटे इंटरेस्ट रेट जो थरे कि जदि हमर रेपो रेट बढ़िबो ताहले बोरोइंग कॉस्टली हुए तो क्रेडिट कौन हम बैंक्स माने क्रेडिट दबा कम कर देबे एंड जहा फल रे इकोनॉमी रे मनी सप्लाई डिक्रीज हो देन हमर कौन रही रिवर्स रेपो रेट जदि इंक्रीज हला रिवर्स रेपो रेट ताहले बैंक्स माने कौन करबे दे विल पार्क मोर फंड तो लिक्विडिटी एठी भी कमिबो सीआरआर सीआरआर को कहंदी कैश रिजर्व रेशियो केमिति इन्फ्लुएंस करछि इकोनॉमी को सीआरआर इंक्रीज हेले बैंक्स माने मोर फंड्स रखिबे विथ आरबीआई एंड लेस लेंडिंग कैपेसिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर जदि एसएलआर इंक्रीज करे ताहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रे मोर फंड्स लगेबे अधिका फंड मोर फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सो लेस क्रेडिट आउ गोटे क्वांटिटेटिव टूल अछि जाको कहंदी ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कोन हुए आरबीआई मार्केट रे बाइज आउ सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रो जेतेबेले आरबीआई सेल करिवो सिक्योरिटीज ताहले अब्सॉर्ब करिवो से लिक्विडिटी माने जदि से मार्केट रे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कला ताहले जी से एमती गोटे सिंपल एग्जांपल रे बुझो थरा आरबीआई मार्केट रे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से सेल कला ताहले जी से को किनिबो हैला तो सी आ बदल रे आरबीआई को पैसा दबो आउ आरबीआई तो कहबो कि गोटे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम परे सी इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल तको दबो सो एथरे कोन हैला तो इकोनॉमी रो से लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कला आरबीआई जेतोले बाय करे सिक्योरिटीज ताहले आरबीआई पैसा दबो सो इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इम्पैक्ट इम्पैक्ट की ये डायरेक्टली अफेक्ट करे मनी सप्लाई जोटा को आमे ब्रॉड मनी कहि दउ M3 इंटरेस्ट रेट्स एंड ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी
सेकेंड आम देखा क्वालिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी सिलेक्टिव टूल्स जाऊ कहते एंड आंकर कंट्रोल होची स्पेसिफिक सेक्टर और यूज ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करवा की इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जिते हायर मार्जिन रहिबो सेते लेस बोरोइंग हबो फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पसेस देन आउ गोटे कोन क्वालिटेटिव क्रेडिट रैशनिंग रे लिमिट कर दिया जाए क्रेडिट को टू सर्टेन सेक्टर्स देन मोरल सुएशन रे कौन हुए आरबीआई बैंक्स मान को पर्सुएड करे टू फॉलो पॉलिसी डायरेक्शंस देन डायरेक्ट एक्शन से बैंक को पेनालाइज करा जाए एथिरे फॉर नॉन कॉम्प्लायंस सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल restricts loans for non-essential commodities. Impact. The impact होची it does not change the total money directly. Total money directly इथि change हुए नहीं ठीक अछि and it influences flow of credit then priority versus non priority sector को सेक्टर को अधिक प्रायोरिटी दिया जिवो को सेक्टर को कम प्रायोरिटी दिया जिवो prevents speculative bubbles right आंकर कंबाइंड रोल कोन रहउची इकोनॉमी रे what is the combined role quantitative tools से माने कोन करंती they manage inflation liquidity growth qualitative रे कोन हुए they ensure balanced and responsible credit use together से माने कोन करंती they maintain the financial stability conclusion हमरो जो quantitative and qualitative instruments हमें देखिले से माने कोन करंती दियन दियन को कॉम्प्लीमेंट करंती while the former ये कोन करे वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करे एंड सेकेंड टा कोन करे प्रॉपर एलोकेशन को रेगुलेट करे enabling the RBI to achieve both macroeconomic stability and targeted economic development. Value added features and comprehensive support एठी आपन को मिलुची total learning ecosystem जदि एठी हमें देखिया को पाइबा ताले revision support live interaction exclusive resources आपन को मिलिबो revision support रे targeted GS1 and CSAT रो classes रहइबो with recorded video access for any time revision excuse me live interaction रे dedicated live doubt clearing sessions रहइबो one on one personal mentorship रहइबो exclusive resources रे मु कहिछि कि revision study notes आपन को available कर दिया जिवो दे 19 years रो आपन को chapter wise और topic wise solved PYQs भी एठी मिलुची 36 टा टेस्ट रो जदि हमें ब्रेकडाउन देखिबा फर्स्ट होची GS1 रो 28 टा टेस्ट एंड CSAT रो 8 टा टेस्ट रहउची 22 टा सेक्शनल 6 टा फुल लेंथ एठी 4 टा सेक्शनल और 4 टा फुल लेंथ टेस्ट रहउची डिटेल्ड आंसर कीज एक्सप्लेनेशन पोस्ट टेस्ट डिस्कशन क्लासेस भी आपन को रहइबो बाइलिंगुअल रहइबो मोड जोथरे कि इंग्लिश की ओडिया आपन जो मोड रे चाहिए से मोड रे दे परिबे फ्लेक्सिबल मोड्स रहइबो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दीटा अवेलेबल अछि बेंचमार्किंग ऑल ओडिसा रैंकिंग भी आपन को मिलिबो सो दैट यू कैन एनालाइज कि आपन कोठी स्टैंड करूछंती प्रिपरेशन रे कोठी लूप होल्स रहि गला गैप्स रहि गला तो केमति मैच करिवे टू ट्रैक योर स्टैंडिंग अमंग द पीयर्स बोनस मटेरियल होची 1 ईयर करंट अफेयर्स मैगजीन एथरे इंक्लूडेड अछि सेटा सेपरेट नुहे ओके discuss the role of the RBI in controlling money supply and ensuring economic stability highlight its major functions read the question
Reserve Bank of India act as the central bank, and it plays a key role in regulating the money supply, maintaining the price stability, growth and financial stability in economy. Okay. Role of RBI in controlling money supply. आमे चारिटा पिलर देखिले ताको वन बाय वन आमे डिस्कस करबा. फर्स्ट ऑफ ऑल मनी सप्लाई को से केमती कंट्रोल करे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स द्वारा. अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आमे वन बाय वन प्रीवियस क्वेश्चन रे आमे सब डिस्कस करछे. मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स रे केमिति लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस होय इकोनॉमी रो. मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स द्वारा. ठीक अछि. फर्स्ट आसीबो हमर रेपो रेट, देन रिवर्स रेपो रेट आसीबो, देन सीआरआर आमे देखिले. ठीक अछि. ए सब मु आउथरे डिस्कस करूनी काइना प्रीवियस क्वेश्चन रे डिस्कस हेछि. एसएलआर, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, एगुडी को आसी जिवो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स रे. देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क भी फॉलो करे टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. ठीक अछि. आरबीआई कोन करे गोटे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉलो करे. सेटा होची 4% प्लस माइनस 2%. ठीक अछि. 2% ऊपर नीचे हे पारे. मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी. रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएशन से बैंक्स मानकर एबिलिटी को भी एटी कंट्रोल करे टू क्रिएट क्रेडिट थ्रू इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हैला, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. देन आमे तार रोल देखिबा इन एन्श्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. फर्स्ट आसीबो प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक अछि. प्राइस स्टेबिलिटी रे कोन हुए, इन्फ्लेशन एटी कंट्रोल हुए, प्रोटेक्ट परचेजिंग पावर. देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एटी एंश्योर करे, माने इट रेगुलेट्स द बैंक्स, it regulates the NBFCs, prevents financial stress. Growth promotion. Expansionary policy follow हुए during slowdown and contractionary जेमति कि एठी expansionary policy और contractionary policy. Expansionary policy during slowdown and contractionary policy during the inflation. आ गोटे कोन रहइबो, आ होची crisis management. Crisis management कोन, it acts as lender of last resort. माने it provides liquidity in time of crisis. For example, pandemic support हला. Then major functions discuss करिबा भी गोटे डिमांड थिला क्वेश्चन रो. थर्ड, major functions of RBI. Issue of currency. Issue of currency, sole authority to issue currency notes except 1 rupee note किए बाहर करे, finance ministry. Issue of currency. Then banker to government. गवर्नमेंट अकाउंट्स को मैनेज करिबा, पब्लिक डेट को हैंडल करिबा, ये सब आरबीआई करे. आउ कोन फंक्शन, बैंकर्स बैंक. कमर्शियल बैंक्स मान को फंड प्रोवाइड करे, सीआरआर मेंटेन करे. देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करके क्रेडिट को कंट्रोल करे इन इकोनॉमी. देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज.
फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करबा ठारो आरंभ करिकि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करी रखिबा ए सब आरबीआई रो फंक्शन रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम लाइसेंसेस ग्रांट करे बैंकिंग ऑपरेशंस को सुपरवाइज करे सो ओवरऑल इम्पैक्ट रे से कौन करे कंट्रोल करे मॉनेटरी सप्लाई मनी सप्लाई इन्फ्लेशन देन लिक्विडिटी तापरे एन्श्योर करूची मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम through its monetary policy tools and regulatory functions RBI कौन करूची गोटे क्रुशियल रोल प्ले करूची इन बैलेंसिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ and financial stability, making it the backbone of India's economic governance. जो कोर्स आपनकर लॉन्च हेची इट इज बियॉन्ड द डिवाइड एंड मूव ऑन अप्रोच जो थी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट सेपरेट करिकरी पर सब्जेक्ट को पढ़ाती डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू आइसोलेटेड पार्ट्स किंतु एठी गोटे इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी फॉलो होची जोटी कि सब्जेक्ट्स मानको इंटरलिंक करिकरी बा लेयर करिकरी तांको पढ़ा जिवो सो गोल होची मूविंग फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन. The political contest between Afghans, Mughals, and Rajputs shaped the course of North Indian history in 16th century. Critically analyze the factors behind the Mughal success and gotte second. The question से discontinue ही है जी देखिए हाँ and decline Afghan decline and assess the role of Rajputs in this power struggle. ठीक है read the question once again. 16th century North India से कौन विटनेस करथिला से गोटे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल विटनेस करथिला ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को मानक मध्य रे फर्स्ट होची अफगान आसी जिवे देन मुगल्स देन राजपूट्स इवेंचुअली कौन हैला मुगल मानकर सक्सेस हैला जोटा कि एक्सीडेंटल नथिला किंतु तांको पाखरे जेहेतु मिलिटरी सुपेरियरिटी थिला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थिला एंड राजपूत अलायंसेस थिले
से माने सक्सेसफुल हेले व्हाई जो अफगान्स माने रहले तांकर डिक्लाइन हेतिला स्टेम्ड फ्रॉम देयर स्ट्रक्चरल वीकनेस जोटा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस रे ऑलरेडी डिस्कस कर सकछे बॉडी फैक्टर्स बिहाइंड मुगल सक्सेस फैक्टर्स बिहाइंड मुगल सक्सेस फर्स्ट होची मिलिटरी सुपीरियरिटी मिलिटरी सुपीरियरिटी थिला से माने कोन करथिले गन पाउडर यूज करथिले गन पाउडर टेक्नोलॉजी तांक पाई थिला आर्टिलरी मैच लॉक्स देन इनोवेटिव टैक्टिक्स थिला जेंदी मु कहिची तुलुगमा बा फ्लैंकिंग आ गोटे वैगन लैगर सिस्टम थिला ओके फॉर एग्जांपल एठी आपण पानीपत रा भी पानीपत पानीपत रे जो से माने विक्ट्री हासिल करथिले 1526 रे एंड आ गोटे खानुआ रे एग्जांपल एठी दे परिबे ओके देन स्ट्रांग लीडरशिप स्ट्रांग लीडरशिप थिला तांकर बाबरकर गोटे स्ट्रेटेजिक विजन थिला डिसिप्लिन थिला अकबर थिले से कंसोलिडेट करथिले एक्सपैंड करथिले सो दे हैड द एबिलिटी टू यूनिफाई डाइवर्स ग्रुप्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होचे सेंट्रलाइज सिस्टम से माने फॉलो करथिले जेमति कि मनसबदारी सिस्टम हैला इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम हैला जेमति मु तोडार माल को कथा कहितली ठीक अछि एन्श्योर स्टेबिलिटी एंड रेगुलर इनकम इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कॉन्सिलिएशन पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन फॉलो करथिले राजपूत का संगे रिलीजियस टॉलरेंस जो सुली कोल मो अगेन एठी किछि लेखि कि डिस्क्राइब करूनी काहे कि ना प्रीवियस क्वेश्चन रे डिस्क्राइब हेछि आमे एठी टाइम वेस्ट करबानी इंटीग्रेटेड लोकल एलिट्स मानको से माने इंटीग्रेट करथिले इनटू एम्पायर आ अफगान मानकर कोन पय डिक्लाइन हैला ट्राइबल एंड फ्रैगमेंटेड पॉलिसी से माने फॉलो करथिले अफगान नोबल से माने कोन करथिले ऑटोनॉमी को बेसी प्रेफर करूथिले सेंट्रल अथॉरिटी तांकर वीक हे गला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स internal conflicts and frequent rebellions among the nobles there was lack of unity after the strong rulers military backwardness ठीक है the continued reliance on cavalry and the war elephants limited use of gunpowder sorry limited use of gunpowder short lived revival शेर शाह सूरी जो थिले से गोटे बहुत ही गोटे ब्रीफ समय पाई ब्रीफ पीरियड पाई पुणी थे रिवाइवल होता अफगान्स मानकर अंडर शेर शाह सूरी कहीं से टेम्परली रिस्टोर करते अफगान स्ट्रेंथ को किंतु तांकर पुणी डेथ पर सक्सेसर्स माने वीक प्रूव हेले रैपिड डिसइंटीग्रेशन हैला ऑफ सूर एम्पायर सो तांकर रिवाइवल टा शॉर्ट लिव्ड थिला रोल ऑफ राजपूत्स इन पावर स्ट्रगल रोल ऑफ राजपूत इन पावर स्ट्रगल फर्स्ट होची इनिशियल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस माने अंडर राणा संगा राजपूत्स माने कोन करथिले दे ट्राई टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी डिफीटेड बाय बाबर एट खनवा shifted to alliance with Mughals अकबर कर पॉलिसी थिला कि से मैरिज अलायंसेस फॉलो करूथिले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन फॉलो करूथिले देन राजपूत से माने कोन हेले मिलिटरी अलाइज हे गले एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिट्स भी हे गले अंडर मुगल्स contribution to Mughal consolidation ସେମାନେ लॉयल सपोर्ट रीजनल लेजिटिमेसी ये सब प्रोवाइड कले मुगल मानकू एंड हेल्प इन एक्सपेंशन गुजरात बंगाल डेक्कन लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन
तापर आसे लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन एथिरे कोन हला कि किछि रेजिस्टेंस एबे भी कंटिन्यू करथला से माने 100% तो पूरा सपोर्ट करनथले किछि रेजिस्टेंस सेतबेले भी थिला एग्जांपल मेवार अंडर महाराणा प्रताप एग्जांपल देबे मेवाड़ प्रताप सो आमे एठी देखिले जो मुगल सक्सेस थिला इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिप्लोमेसी अफगान्स मानकर जो फेलियर हेतिला बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल वीकनेस प्लस डिसयूनिटी एंड राजपूत्स माने से माने चैलेंजर्स रु पार्टनर्स को कन्वर्ट हेतिले फ्रॉम चैलेंजर्स टू पार्टनर्स क्रुशियल इन स्टेबलाइजिंग द एम्पायर Mughal Empire emerged victorious due to its superior military technology, centralized administration, inclusive policies, whilst to Afghans mane rahile they declined due to fragmentation, and जो Rajputs mane rahile they are initially opponents किंतु सेमाने collaborators they became the key collaborators significantly shaping the political consolidation of Mughal India in North India. So OPSC OS prelims ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କହିଛି କି past 19 years ର I mean 2006 ରୁ ନେଇକି 2025 ଯାଏ ସବୁ papers ର ଏଠି subject wise and chapter wise ଏଠି question with answer and explanation ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ এই book ରେ book already launch ହେଇ ସାରିଛି Last question ajiro monetary policy plays a crucial role in managing inflation growth and financial stability statement dela tapare pachala ki examine kariyaku the process of creation of money and supply of money creation out supply of money and analyze kemiti money create hochi out then supply hochi se process ta kona and how RBI uses various policy instruments ame already dekhiche including base rate quantitative qualitative tool to regulate the economy read the question टिके बड़ा question अछि 15 to 20 seconds में एठी दउछि समस्त टिके brainstorm करियेबो monetary policy होची गोटे की macroeconomic
जो थिरे कि कोन हुए रिजर्व बैंक आरबीआई मॉनेटरी सप्लाई क्रेडिट इन्फ्लेशन ग्रोथ एगुड़िक सब रेगुलेट करे सो जदि आमे मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़िबा ताहले आमे इजीली एटा जानि परिबा कि मनी केमिति क्रिएट होची एंड सप्लाई होची मनी क्रिएशन एंड मनी सप्लाई जोटा कि बहुत ही एसेंशियल टू एनालाइज हाउ आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी process of money creation मनी केमती क्रिएट होची एटा हम डिटेल रे बुझिबा एटी क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स जोटा भी हम क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स कमर्शियल बैंक माने से माने केमिति मनी क्रिएट करती से माने थ्रू क्रेडिट क्रिएशन ओके बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम commercial banks they create money through credit creation based on fractional reserve system mechanism कोन बैंक्स माने कोन करंती किछि फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स माने रहिले किछि फ्रैक्शन से माने as CRR रखंती एंड लेंड्स द रेस्ट एंड ताको पाखे आ बाकी जहा रहिला ताको कोन करंती से लोन बा क्रेडिट हिसाब रे से माने दे दियंती किछि फ्रैक्शन तो सीआरआर रखिले आउ किछि फ्रैक्शन लोन बा क्रेडिट से माने देले लोन तो दिया गला become deposit in another bank further lending which leads to further lending and a mechanism कोन क्रिएट करूची it is creating a multiple expansion of money now what are the measures of money supply in India first driver M0 reserve money M0 रे कोन आसे करेंसी आसीबो प्लस बैंक रो जो रिजर्व्स आसीबो विथ आरबीआई M1 तापर हमर आसीबो M1 जोटा कहंती नैरो मनी नैरो मनी होची करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स माने सेविंग्स अकाउंट हे गला करंट अकाउंट हे गला एगोडा सब डिमांड डिपॉजिट रे जाय M3 होची ब्रॉड मनी M0 M1 M3 एटी मन रखिबे ब्रॉड मनी एटी होची M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ओके आरबीआई एटी कोन करे M0 को कंट्रोल करे एंड एटी M0 कोन करिवो ओवरऑल मनी सप्लाई जोटा M3 हमर ब्रॉड मनी कहंती ताको कंट्रोल करिवो थर्ड आरबीआई रो इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई रो इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी हमें इन डिटेल देखि सारचे बस एटी खाली मुटिए ब्रीफली कहि दउची दीटा टाइप रो तर इंस्ट्रूमेंट थाए गोटे होची क्वालिटेटिव से फॉलो करे आ गोटे क्वांटिटेटिव से फॉलो करे क्वांटिटेटिव कोन पई कि क्वांटिटेटिव ओवरऑल लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को अफेक्ट करे सो क्वांटिटेटिव रे हमर आसे रेपो रेट आसी जिवो रिवर्स रेपो रेट आसीबो सीआरआर देन एसएलआर ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओके एगुडा सब आसी जिवो क्वांटिटेटिव रे क्वालिटेटिव रे कोन आसीबो क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्रेडिट रेशनिंग मोरल सुएशन direct action मान जो penalties लगे it ensures a credit to priority sectors and prevention of the bubbles ठीक है interest rate framework
इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क जेमती कि बेस रेट है हमर MCLR एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट कौन बेस रेट हूँ मिनिमम लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स ताकू बेस रेट कहा जाए बेस सेटा फ्लोर जे कि ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करे बट वीक ट्रांसमिशन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी बट वीक ट्रांसमिशन MCLR होची बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ये कौन कला ट्रांसमिशन को इंप्रूव कला it improved the transmission external benchmark lending rate EBLR it also linked to repo rate or treasury bills ठीक अछि faster transmission of policy changes role in managing economy रोल कौन इकोनॉमी मैनेज करिबारे फर्स्ट होची इन्फ्लेशन कंट्रोल देन ग्रोथ प्रमोशन इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया पई कि आरबीआई कौन फॉलो करे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी माने सेई टाइम रे सीआरआर आउ जो रेट्स रहिला माने रेपो रिवर्स रेपो एगुडा सब से बढ़ाई देबो ग्रोथ प्रमोशन केमिति हबो ग्रोथ प्रमोशन हबो एक्सपांशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कले एक्सपांशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करिया माने कि रेट्स को रिड्यूस करि देबा financial stability regulate the bank prevent the crisis credit regulation it ensures banks balanced sectoral development conclusion by controlling money creation supply and credit flow and using a mix of quantitative ହେଇଗଲା कि qualitative or interest rate tool आरबीआई एठी कोन करछि आरबीआई एठी गोटे डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करिकि रखुछि बिटवीन इन्फ्लेशन growth and financial stability making the monetary policy central to economic governance ऑल राइट तो एठी हमें 6टा जक क्वेश्चन जोटा हम डिस्कस करियार थिला हमें तो डिस्कस करि सारचे तो एठी मु एठी समस्त को एडवाइस करबी कि समस्त एठी मस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिवे जहां भी आपनकर मॉक्स सब कंडक्ट हबो सब मॉक्स अटेम्प्ट करिवे डोंट ट्राई फॉर परफेक्ट आंसर्स फोकस ऑन राइटिंग अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रिच आंसर विद इन टाइम कीवर्ड्स यूज करंतु सब हेडिंग्स यूज करंतु शॉर्ट फ्रेजेस यूज करंतु एंड जहां भी आपनकर नोट्स रे जहां भी कांसेप्ट अछि ताको बार बार ताको रिवाइज करंतु फुल पैराग्राफ्स किसी लिखिबा दरकार नहीं राइटिंग प्रैक्टिस कले से फ्लो आपे आप आसी जिवो consistency is more important than perfection so keep writing and improving and thank you for watching